Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question number 7. A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. Now, if the length of the pencil is 14 cm, find the volume of wood and that of graphite. अगर एक पेंसिल है, आपने पेंसिल को ऑब्जर्व किया होगा, उसमें वुड के अंदर ग्रेफाइट इंस्क्राइब्ड होता है. सो वुड का एंड ग्रेफाइट का आपको डायमीटर ऑलरेडी गिवन है, हाइट ऑफ द पेंसिल गिवन है. यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड ग्रेफाइट सेपरेट. लेट अस सी. सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालें, सो डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज ऑलरेडी गिवन टू अस. सो इफ वी यूज दैट वॉल्यूम, उसको अगर हम यूज करें, सो वी विल गेट पाई इंटू 1/20 होल स्क्वायर, क्योंकि r है हमारे पास 1/20. 1/20 क्यों हुआ? क्योंकि mm को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया. सो दैट इज 22 इंटू 1/400 इंटू 14, which gives us 0.11 centimeter cube as the volume of graphite. Now we have to find out the volume of wood. So volume of wood would be equal to the volume of the cylinder, complete cylinder, उसका जो हमें वॉल्यूम गिवन है, माइनस the volume of graphite. ठीक है, दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो वुड का वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा. सो वॉल्यूम सिलेंडर में उसका हमें वॉल्यूम रेडियस भी गिवन है एंड हाइट भी गिवन है. सो इट गिव्स अस 22/7 इंटू 7/20 होल स्क्वायर इंटू 14 माइनस 0.11, which ultimately gives us 5.39 minus 0.11, that is 5.28 centimeter cube.